Act 1, Scene 6 of Macbeth. In this scene, King Duncan has come to the house of Macbeth. Act 1, Scene 6. In this scene, King Duncan has come to the house of Macbeth to celebrate the victory of Scotland, to celebrate the victory of King Duncan, Macbeth Banquo, over his enemies like Thane of Cawdor, previous Thane of Cawdor, MacDonald, and King of Norway. So this is a scene in which Duncan is about to enter in the beginning into the castle of Macbeth. Before Macbeth's castle, flute and torches, मतलब मसाल जल रहे हैं, music बज रहा है to welcome King Duncan. Enter Duncan and his eldest son Malcolm, Donalbain, Banquo, Lennox, Macduff, Angus, and attendants. So many people are coming along with Duncan to celebrate the victory of Macbeth, Duncan, and everybody against the enemy. So King Duncan looks at the castle of Macbeth. Macbeth के घर का नाम है Inverness. Macbeth के घर का नाम है Inverness. So King Duncan looks at the castle of Macbeth and he says, "This castle has a pleasant seat. The air nimbly and sweetly recommends itself to my senses." King Duncan is saying, this castle has a pleasant atmosphere. इसका बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब वाला ये जगह है. कौन? The place where Macbeth lives. Macbeth का castle बहुत ही खुशनुमा है, happy है, joyful है, positive है. The air sweetly and nimbly recommend itself to my senses. Duncan says यहाँ का हवा बहुत sweet है, बहुत soft चल रहा है, and it affects my senses. मतलब यहाँ का बहुत ही अच्छा atmosphere है जो मेरे senses को influence कर रहा है. So King Duncan is about to enter into the castle of Macbeth, and he says this castle has a very positive atmosphere. The wind is blowing very calmly and it is influencing my senses. So while they're about to enter the castle of Macbeth, they suddenly watch a bird or the nest of the bird along with the bird. So Banquo is looking at the bird and he says, Banquo, घोंसला देख रहा है चिड़िया का और वो बोल रहा है, दिस गेस्ट ऑफ समर, ये जो गेस्ट ऑफ समर है मतलब मार्टलेट बर्ड, चिड़िया का नाम है मार्टलेट. सो बैंको इज सेइंग ये जो मार्टलेट बर्ड है ये समर में आती है. इट्स अ सीजनल बर्ड दैट नॉर्मली कम्स इन द समर सीजन बिकॉज समर सीजन हैज गुड एटमॉस्फेयर इन स्कॉटलैंड एंड इट्स अ बाकी विंटर कंट्रीज माने जहाँ स्नोफॉल होता है. सो दिस बर्ड दे माइग्रेट टू सम अदर कंट्री. So they come in summer. So this guest of summer is martlet bird. Banco बोल रहा है ये जो guest of summer है ये martlet bird, ये टेम्पल हॉन्टिंग मार्टलेट है. ये मार्टलेट बर्ड जो है ये नॉर्मली टेम्पल में रहते हैं. हॉन्टिंग मैंने लिविंग और टेम्पल यहाँ मतलब है धार्मिक प्लेस, नॉट इंडियन टेम्पल बट अ चर्च. सो टेम्पल मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप. इट इज रिलेटेड टू नो जेंडर इन दैट सेंस. सो ही सेइंग कि ये जो चिड़िया है ये नॉर्मली टेम्पल में रहती है, मतलब वर्शिप की जगहों में रहती है. कौन? मार्टलेट बर्ड. सो ये गेस्ट ऑफ समर है, यहाँ समर में रहने वाली चिड़िया मार्टलेट है, विच इज नॉर्मली टेम्पल हॉन्टिंग, माने टेम्पल में रहने वाली, LIVING, टेम्पल में रहने वाली मार्टलेट. डज अप्रूव बाय इट्स लव्ड मैसनरी. मतलब वो अपना मैसनरी में घोंसला, NEST. So this bird by making its nest does prove what? That heaven breath swell wingly here. मतलब heaven का जो हवा है यहाँ बह रहा. Swell spreads attractively here. मतलब जन्नती हवा चल रहा है, हेवनली हवा चल रहा है. क्यों? क्योंकि मार्टलेट बर्ड घोंसला तो चर्च में बनाती है. Thereby this place has become very, very heavenly. Thereby the irony is that this is such a heavenly house. This is such a temple haunting place. This is such a positive place, but at night Duncan will be killed. So this is the irony. No jetty, no fridge.
no buttress or coinage of vantage. This is a description of the martlet bird. इन ये 5-6 वर्ड से martlet bird का description है. कोई जटी नहीं, कोई फ्रिज नहीं. जटी मतलब होता है प्रोजेक्शन. ओके, बटरेस मतलब होता है सपोर्ट. फ्रिज मतलब होता है पैनल. कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पैनल नहीं है, कोई पिलर नहीं है, कोई कॉइनेज ऑफ वेंटेज मतलब एडवांटेज कॉर्नर, जहां कुछ कोना में जगह हो, कासल में जहां चिड़िया घर बनाई, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब ये चिड़िया न पिलर पे घोंसला बनाई है, न कोई कॉर्नर में बनाई है, न कोई पैनल है, न कोई सपोर्ट है. तो कैसे है ये चिड़िया? दिस बर्ड हैज ए पेंडेंट बर्ड. ये चिड़िया जो है, इसका घोंसला जो है पेंडेंट की तरह, मतलब झूलने वाला इसका नेस्ट है. एंड इट इज प्रोक्लेंट कैडल, मतलब यहीं पे वो रिक्रिएशन मतलब अपना ब्रीडिंग करती है. सो दिस बर्ड हैज ए हैंगिंग नेस्ट, एंड दिस बर्ड हैज ए नेस्ट इन विच दे प्रोक्रिएट. इसी में वो अपब्रिंगिंग अपने बच्चों को करती है. Okay. So this bird has where the breed and haunt. तो ये पेंडेंट बर्ड है, ये प्रोक्रिएंट कैडल है, मतलब झूलने वाला कैडल है. और ये इनका जो घोंसला है, ये जहाँ ब्रीड करती है, मतलब अपने फ्यूचर जनरेशंस को बड़ा करती है, पालन पोषण जहाँ ये लोग रहती है. बैंको इज सेइंग, आई हैव ऑब्जर्व्ड एयर इज वेरी डेलिकेट. वहाँ का एयर बहुत ही अच्छा होता है, वहाँ का एयर बहुत ही पॉजिटिव होता है. कहाँ का एयर? जहाँ मार्टलेट बर्ड लोग रहती है. दिस इज अ ड्रामेटिक आयरनी. द मार्टलेट बर्ड विच हैज नो support, the martlet bird which does not make its pillar on the does not make the nest on the pillar. Okay, ये सब चिड़िया जो है, तो मार्टलेट बर्ड जहां भी रहती है वो जगह बहुत होली होता है, लेकिन the irony is this very night this holiness will become unholy. Duncan, see our honored hosted. The love that follows us is sometimes trouble, which still we think as love. Duncan is now suddenly Lady Macbeth आती है दरवाजे पे, तो Duncan से see Lady Macbeth. The love that follows us is sometimes trouble. यहाँ us मतलब all through this scene, and whenever Duncan speaks, us मतलब होता है मैं. So he's saying that people do things for me out of love, but it is a trouble to them. मतलब जो मेहमान नवाजी करते हैं लोग out of love, it is trouble. So he is saying, but still we thank them for their love. So लोग बोलते हैं कि कभी कभी मेहमान नवाजी ट्रबलसम होता है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रबल नहीं देख के मेहमान, मतलब जो हमारा खातिरदारी करता है, उसको हम लोग थैंक यू बोलते हैं. So Duncan says that sometimes what people do to entertain, for hospitality of King Duncan, it is a trouble for them. But it is our trouble, मतलब हम लोग के लिए ट्रबल होता है, लेकिन still we thank as love. फिर भी हम लोग थैंक यू बोलते हैं. डंकन का यहाँ आना भी उसके लिए भी ट्रबल है, लेकिन he is doing it out of love. We don't see the trouble, we only see the love. Okay, डंकन के लिए आना भी ट्रबल है, but we see only his love, that because of which he has come here. It is trouble for Lady Macbeth and Macbeth, but they only see Duncan's love. Herein I teach you that you shall bid God yield us for your pain, mean reward us for your pain. So he's saying, I am teaching you that you should request, pray to God to reward me for your pain. मतलब मैंने तुमको पेन दिया. कैसा पेन? यहाँ Duncan comes with a huge number of people, so of course it's a pain for the guest, I mean pain for the host, Macbeth, Lady Macbeth and his team. So ये pain है. So he's saying कि God will reward you for your pain because आपने मेहमान गेस्ट का देखभाल किया, so God will reward you. So and you should thank me that I gave you the trouble. मतलब मैं यहाँ आया. When Duncan came to Macbeth's house, so as a result of which Macbeth had trouble. So because of this trouble, God will reward Macbeth and Lady Macbeth. So ना Duncan आते, ना Macbeth, Lady Macbeth को trouble होता, ना भगवान का reward मिलता. So here Duncan is saying कि I am requesting you, teaching you कि you should pray to God to reward me, because
I gave you the pain. As a result of the pain, you got the blessing of God. So thank us for your trouble. He's saying हमको भी thank you बोलिए. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पेन दिया है, दर्द दिया है. अब आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा और इस मेहनत की वजह से आपको ब्लेसिंग मिलेगा, भगवान का पुण्य मिलेगा. Lady Macbeth. All our services in every point and then twice done and then double. लेडी मैकबेथ बोल रही है हम लोग का जितना भी खातिरदारी है उसको डबल करके डबल भी किया जाए, डबल करके डबल भी किया जाए, तो भी वो पुअर है, तो भी वो सिंगल है, मतलब लेस है. टू कंटेंट मतलब टू compete with those honor broad and deep where your majesty lords upon us. सी सेइंग कि हम लोग का हर काम को डबल करके डबल भी किया जाए, डबल करके डबल भी किया जाए, तो भी वो कम है, तो भी वो कम है. अगेंस्ट दोज ऑनर डीप, मतलब आपने डंकन ने इतना ऑनर दिया है, इतना रिवॉर्ड दिया है, और सबसे बड़ा ये द मैजेस्टी, मतलब किंग हिमसेल्फ लोड्स द हाउस, मतलब फील्स द हाउस विद हिज ओन पर्सन. सो लेडी मैकबेथ इज सेइंग ऑल ओवर सर्विस, ऑल ओवर मेहमान नवाजी, हॉस्पिटलिटी, उसको डबल करके डबल करके डबल करके डबल किया जाए, फिर भी वो कम है compared to what Duncan has done to them. What he has done, the greatest thing he has done, he has come to the house. He has loaded the house. And of those low, old and late dignities, पहले का जो थेन ऑफ ग्लैमिस का टाइटल, अभी जो रिसेंट थेन ऑफ कॉर्डर का टाइटल, सबको ऐड करके किया जाए, तो लेडी मैकबेथ बोल रही है, we will become your hermit. We will rest for the, we will be hermit for the rest of the life. Hermit means the one who prays for the person. So he is saying, लेडी मैकबेथ is saying कि सर आपने ओल्ड पहले से इतना दिया है, लेट डिग्निटीज रिसेंटली इतना दिया है, सबको अगर हीप अप किया जाए, गैदर किया जाए, तो हम लोग आपके हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहेंगे एंड वी विल प्रे फॉर यू. सो लेडी मैकबेथ सेज, जैसे डंकन ने कहा कि यू शुड प्रे टू गॉड to bless me, to reward me because I came and gave you trouble, as a result of which you will get the blessing of God. So Lady Macbeth said, sir, अगर हम लोग का हर सर्विस को डबल करके डबल किया जाए तो भी ये पुअर है, कम है, सिंगल है, लेस है. टू कंटेंट मतलब टू कम्पीट अगेंस्ट द ग्रेट ऑनर, डीप ऑनर, मतलब पावरफुल ऑनर, ब्रॉड मतलब वैरायटी ऑफ ऑनर दैट यू हैव गिवन अस, एंड यू हिम योरसेल्फ, मतलब डंकन खुद यहाँ आ गया है. आउट ऑफ लेड एंड डिग्निटीज ऑल हैव गैदर्ड अप टू देम, मतलब ये जो पुराना नया सब डिग्निटीज जो है, ये सब गैदर्ड होके किंग डंकन के पास, किंग डंकन ने मैकबेथ को दिया है. So लेडी मैकबेथ इज सेइंग, for this we become your hermit, we become your servants, और हम लोग हमेशा आपके लिए दुआ करेंगे. डंकन, where is Thane of Cawdor? डंकन इज वेरी सरप्राइज कि मैकबेथ के घर हम आए, मैकबेथ नहीं. Like, so Duncan is saying, where is Thane of Cawdor? We crossed him at the hill. Crossed him at the hill मतलब we followed him at a great speed, but he had a purpose to be purveyor. Purpose to be purveyor मतलब Duncan is saying कि Macbeth wanted to come before us. Purveyor मतलब one who precedes before. So Duncan is saying कि हम लोग उसके पीछे पीछे आए, डंकन लोग मैकबेथ के पीछे पीछे, और ये लोग चाहते थे कि वो मैकबेथ से पहले आ जाए, बट मैकबेथ wanted to be the person to come first in his house. But he rides well. Duncan is saying Macbeth rides well, and his great love is like his great galloping speed. जितना वो हमसे प्यार करता है उतना ही तेज. डंकन इज सेइंग कि जितना मैकबेथ प्यार करता है हमसे, इस उतना ही तेज वो घोड़ा दौड़ाया है. एंड हैज हेल्प मी, he helped है to his house before us. So Macbeth has come before King Duncan because he loves King Duncan a lot. This is again irony. डंकन को लग रहा है कि मैकबेथ हमसे पहले आया है बिकॉज मैकबेथ हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस मैकबेथ इज एक्चुअली कम बिकॉज ही इज प्लानिंग फॉर द मर्डर असैसिनेशन ऑफ किंग डंकन. तो किंग डंकन इज सेइंग, वेयर इज थेन ऑफ कॉर्डर? मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर कहाँ है? वी क्रॉस्ड हिम एट द हिल, हम लोग जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे आए. वी हैड अ पर्पस, मींस वी हैड अ एम, वी हैड अ गोल. व्हाट? टू बी हिज पर्वेयर. हम लोग चाहते थे कि हम लोग मैकबेथ से पहले पहुंच जाए, लेकिन मैकबेथ तो बहुत तेज घोड़ा चलाता है. एज शार्प एज इज लव, जितना उसके प्यार में पावर पैशन है उतना ही उसके राइडिंग में भी स्पीड है. सो ही केम बिफोर अस, फेयर एंड नोबल हॉस्टेज, वी आर योर गेस्ट टुनाइट.
डंकन बोल रहा लेडी मैकबेथ को, माय डियर होस्टेस, मतलब मेहमान और मेजबान वाला होस्टेस, वी आर योर गेस्ट टुनाइट, आज रात हम आपके मेहमान हैं। लेडी मैकबेथ इज सेइंग योर सर्वेंट एवर हैव देयर्स, लेडी मैकबेथ बोल रही हम लोग आपका सर्वेंट है और हमारे जो सर्वेंट है वो भी आपके सर्वेंट है, which is there in to count to make the audit at your highness pleasure and still to return to your own. So Lady Macbeth is saying कि सर व्हाट इज देयर इन काउंट, मतलब जो कुछ भी है हम लोग आपके सर्वेंट है, हमारे सर्वेंट भी आपके सर्वेंट है, और सब कुछ जो भी है ये सब आपका काउंट है, मैंने आपका लोन है, आपका दिया हुआ है। And whenever you will ask it back, we have to make the audit, we have to give an explanations, and we will return to your own. So Lady Macbeth is saying, sir, जो कुछ भी दिया हुआ ये घर और ये mansion और ये castle सब तो आपका है. So it is all in count, it is all in loan, it is all we owe you. So whenever you will ask, we will give the audit. हम लोग उसको समझा देंगे and we will return it back to you. मतलब लेडी मैकबेथ बोल रही है कि सर ये सब कुछ आपके दिया हुआ, अब जब चाहिएगा हम लोग उसको वापस कर लेंगे, तो हम लोग का कुछ भी नहीं है, तो जो भी कर है सब आपका ही है। Give me your hand. Duncan takes the hand of Lady Macbeth and he says कि चलो हमको ले चलो मैकबेथ के पास. Take me to my host. We love him highly. लेडी मैकबेथ का हाथ पकड़ के डंकन बोल रहा चलो मैकबेथ के पास ले चलो. We love Macbeth highly and will continue our graces when a reward towards him by your leave hostess. बोली चलो हमको, डंकन बोला चलो चलो हमको ले चलो. कहाँ? मैकबेथ के पास. And he says, डंकन बोल रहा है कि हम मैकबेथ से बहुत प्यार करते हैं and will continue our graces, मतलब अपना रिवॉर्ड हम मैकबेथ पे देते रहेंगे बाय योर लीव होस्टिंग, मेरा अगर तुम परमिशन दो तो हम जाएंगे मैकबेथ के पास, हम जाना चाहते हैं मैकबेथ के पास. So Duncan takes the hand of Lady Macbeth and says, Duncan loves Macbeth a lot, and Duncan will continue his reward, his blessings on Macbeth. And he says कि अगर आप परमिशन दो तो हम मतलब डंकन मैकबेथ के पास जाना चाहते हैं. This scene is full of dramatic irony. Duncan feels safest, but he is at his most vulnerable place. Lady Macbeth is called the most best hosted, but she is the worst. Macbeth is called the ultimate best, but he is actually not a protector but a predator. The house is called as heaven, but it will turn out to be hell. The pleasant atmosphere will turn out to be very dangerous and ghastly and horrible and dangerous for but King Duncan. So this scene is a dramatic irony. Of course, Duncan does not know this, but since we know the event of the play, so we can comment that this house, which is called as heaven, is actually hell, and Lady Macbeth is the queen of this hell. So whatever Duncan sees is fair, but actually it's foul. और मैकबेथ का घर का नाम भी है इनवर्नेस, मैंने सब कुछ उल्टा हो रहा है, फेयर चीज जो दिख रहा है वो फाउल हो जाएगा. So the values will be upside down. So thank you for watching the video, and if you have found this video of any meaning, I request you to subscribe the channel if you have not subscribed it. Like the video if you have found any benefit, and share it with people who might need this Macbeth video. And if you have any question, please write in the comment box. Thank you for watching the video.